Hey guys, so I'm back with another video today. So before I begin, I thought of this very beautiful quote or statement you can say, which says, fake it until you make it. So what does this mean? I'm sure many of you know the meaning of fake and fakeness. So being fake or being called fake or faking something is obviously seen in a very negative light most of the times. But this quote in general, fake it until you make it, it is somehow related to your self-confidence, how you reach that bar of excellence. So is it possible to reach that bar by faking everything? I don't think so. So today, this video is all about fake it until you make it. And by the end of this video, I promise you, a lot of things will be clear. So please watch it till end. So as I was saying, fake it until you make it, this advice is being given by people in order to create a self-confidence in you, to create that business sense in you, to create that smartness in you. But in today's video, I'll be relating this quote with stress relieving factor, with inducing happiness within, inducing positivity within. So can we always fake a smile, faking gestures, giving fake positive affirmations to yourself? Is that helping you somehow? Is it helping you in a very long run, or is it very short-lived? So first of all, if I talk about fake smile, हम सबको बोला जाता है जब हम कभी सैड होते हैं, हम कभी वल्नरेबल होते हैं, हम बहुत ही कॉर्नर्ड फील करते हैं, या कभी कभी हमारे गुड डेज नहीं होते हैं. वी ऑल हैव आवर बैड डेज. So at those sensitive moments, we are being asked by others around कि एक positive aura create करो. Smile even if you don't feel like, because if you'll smile, like automatically things will be fine. You will feel happy about everything within you and what's going around you. But I think it doesn't work all the time. So if I talk about faking a smile, तो basically इसके कुछ pros भी हैं, कुछ cons भी हैं. If I talk about cons first, then जब हम feel नहीं करते हैं कि हमें हंसना चाहिए, या हमें अंदर से वो फीलिंग नहीं आ रही है कि हमें खुश होना है, हमें चेयरफुल रहना है, तो हम नहीं कर सकते. बट इफ पीपल आर सेइंग दैट नो, यू नीड टू फेक इट, बिकॉज इफ यूल फेक इट, एट द एंड ऑफ द डे you'll end up feeling that emotion only. Suppose if you'll fake a smile, if you'll fake a laugh, then by the end of the day you'll feel that emotions only and you'll be full of it. But that's not possible. That's not possible because that's not your intention and that's not the way you are feeling at that particular moment. But still, if anybody forces you and you yourself force yourself to do that, that's gonna be a con in the sense कि आप अपने ऊपर एक प्रेशर डाल रहे हो, आप अपने आप को प्रेशराइज कर रहे हो, आप अपनी जो फीलिंग्स हैं, which are your true feelings, it can be a negative feeling but it is true for yourself. So आप उसको रिप्रेस कर रहे हो अपनी फेक स्माइल के जरिए. आप एक स्माइल प्लास्टर कर रहे हो अपने फेस पे, और आपके जो ट्रू इमोशंस हैं, योर वल्नरेबिलिटीज, योर इनसिक्योरिटीज, योर सैडनेस, योर फीलिंग ऑफ बिटरनेस टुवर्ड्स समबडी और मे बी टुवर्ड्स योरसेल्फ आल्सो, आप उसको रिप्रेस कर रहे हो बाय फेकिंग द स्माइल. तो बाय द एंड ऑफ द डे आप क्या कर रहे हो, आप वो जो इमोशंस हैं वो सब पेंट अप करते जा रहे हो, एंड वन डे इट विल बाउंस लाइक अ स्प्रिंग. बट अगर आप अंदर से खुश होना चाहते हो, आप अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को ओवरकम करना चाहते हो, पॉजिटिविटी की तरफ देखना चाहते हो, देन थिंक ऑफ द गुड टाइम्स, think of the good memories, cherish those memories, and kind of look into that perspective कि earlier when you had that particular scenario or that particular group of people around you, तो आप कितना positive feel करते थे उनके साथ, या you had some kind of potential in you. Think about those potentialities and do not feel any kind of लो सेल्फ स्टीम और लो सेल्फ वर्थ. इससे क्या होगा, इससे आप कहीं ना कहीं रियलिटी से टच में भी रहोगे
और आपके जो पास्ट में पॉजिटिव चीजें हुई हैं, दोस पॉजिटिव इवेंट्स, you will cherish those and automatically that will bring a smile on your face in present. Next is as I said, faking and affirmation. तो affirmation या positive statements होती हैं, जैसे हम अपने आप को या हम किसी को comments देते हैं, compliments देते हैं, so we kind of boost up, like we boost ourselves also, or we boost the other persons also by using those positive remarks or affirmations. But क्या हम उन पॉजिटिव एफर्मेशंस के पीछे की जो रियलिटी है उसे डिनाई करते हैं? आर वी लिविंग इन डिनायल इज अ क्वेश्चन वन शुड आस्क वन सेल्फ. सो पॉजिटिव एफर्मेशन इज गुड, like it, as I said, it boosts you up, it creates a sense of self-confidence in you. But if we are going beyond reality, जो इंसान है अगर हम उसे आईना ना दिखाएं तो फिर ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स का क्या फायदा? That's where we are faking positive affirmations. Another is fake being outgoing. So as we all know, there are 3 types of personalities: extrovert, introvert and ambivert. तो ambivert तो आजकल लाइक हर कोई है, हर कोई इसे यूज करता है बहुत ही कैजुअली. मैं ambivert हूँ, मैं मिक्सचर हूँ, मैं extrovert भी हूँ, मैं introvert भी हूँ, depending upon the situation I am in. So I am both of them somehow. बहुत ही कम लोग होते हैं जो एक्सट्रीम्स को प्रेफर करते हैं कि हम इंट्रोवर्ट हैं या हम एक्सट्रोवर्ट हैं. बट ओवर हियर अगेन दे टेक प्राइड इन बीइंग एक्सट्रोवर्ट एंड दे डिमीन देमसेल्व्स समहाउ दैट आई एम एन इंट्रोवर्ट, आई एम अ शाय पर्सन, आई डोंट हैव कॉन्फिडेंस. Reality check, people. Being introvert has nothing to do with confidence. An introvert person can also be as confident and as competitive as an extrovert person is. So there's no comparison. You cannot fake for much longer. So in the long run अगर आप देखोगे तो आपका fakeness नहीं, आपकी reality भी काम करेगी आपके लिए. So be as real as possible. Show the real side. Show your real side to the world. And I hope that if you have a real side, then people will cherish it and people will acknowledge you for the person you are. So yeah guys, that's all for today's video. I hope आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, and I enjoyed taking up this topic. Like really, I got a reality check myself because of course in today's time we knowingly pretend a lot of things about ourselves. So it gave me a reality check too, and I'll be working upon myself, and I'm sure आप लोग भी अपने ऊपर काम करोगे और सोचोगे इस बारे में. So yeah, if you like this video, then please like it, share it, post beautiful comments, बताओ कि वीडियो कैसी लगी और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने friends and family के साथ. I'll be meeting you in the next video. Till then, take care of yourself and your family. Stay in, stay safe. Bye bye.